Hello everyone, and very good morning everyone. Very good morning all, and welcome you all to Ada 24/7 Odia YouTube channel. Ada 24/7 Odia YouTube channel को समस्त को पिला माने ढेर सारा वेलकम. And this is Satya Sir Pedagogy समस्त को वेलकम करछि Ada Odia को. Again जो माने पछे जॉइन करछन समस्त को पिला माने very good morning. तो पिला माने हम माने डिस्कशन करछि आपनकर SSB TGT regarding pedagogy mock test. We have already discussed 7 mock test. 7 mock test माने अराउंड 175 क्वेश्चन हम डिस्कशन करछे. आज मॉक टेस्ट नंबर 8 तो डिस्कशन करिबा. टाइमर से तो जीवा सिलेबस अनुसार सब क्वेश्चन का मेंशन करे पे चेष्टा करछे. तो तुम माने आज टी असेसमेंट इवैल्यूएशन अधिक क्वेश्चन तो तुम माने क्वेश्चन रा आंसर निजे दियंतु टाइमर ऑन सहित तापर म एक्सप्लेनेशन आंसर कहि पे लास्ट को अपन चेक करन जे आपनकर केते मार्क रखसन केते क्वेश्चन रा आंसर अपन ठीक दउसन एटा मध्ये जानिबा निया दरकार. ठीक अछि. सो आज आपण मन पई मो तरफ गोटे छुटिया थर्ड ऑफ द डे पिला माने द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वाज वंस ए बिगिनर. जहाँ को आम आज डेट रे गोटे फील्ड एक्सपर्ट कहचे आगर कोटी मूलरू ही स्टार्ट कर जन्म सब जिन धरिकी स्टार्ट कर न मूलरू ही धीरे धीरे स्टार्ट हुए स्टार्ट हो मनुष्य आगू जाए. द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वाज वंस ऑलवेज ए बिगिनर. यस मन रखा दरकार माइंड सफलता गोटे गोटे दिन हेनी जो हाँ मुझे पढ़ी आज पाई सक्सेस से ट्राए पढ़ा पड़ो टाइम दरकार. यस आम लास्ट होमवर्क जो आपड़ी क्वेश्चन से तार आंसर डिस्कसन करवा देखा को पिला माने ठीक देते आंसर. आज मॉक टेस्ट नंबर 8 आम डिस्कसन करवा लास्ट को आपण मन होमवर्क अच्छी होमवर्क एट द एंड. ठीक अच्छे होमवर्क आंसर कमेंट बॉक्स में दिंतु पिला माने. हाँ एटा थिला आपनकर लास्ट होमवर्क द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ सीसी और जहाँ को मैं कहूँ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ब्रॉट टू बाय कहा द्वारा लागू है. It was first recommended by 1986 NEP द्वारा recommend होता. It was brought to you by RT Act 2009 Network 2009 द्वारा आसी है. कौन सा आंसर देते आंसर तो बहुत सारा छुआ देते राज एंटरटेनमेंट मनोरंजन गिरी संगीता लेट्स डू इट अमरेश पुष्पांजलि बादल आरती रश्मिता भूल कह दीपक पुष्पा प्रियंका स्वाई मिताली मिश्रा ये बहुत सारा ढेर सारा पिला माने आंसर ठीक देते समस्त पिला माने थैंक यू सो मच. ओके तो आरटी एक्ट वाज आरटी एक्ट लागू करथला आपन सीसी को लागू करथे. आंसर इज ऑप्शन ए. तो माने आंसर देसन समस्त पिला माने अगेन मो तरफ है सारा कांग्रेचुलेशन. ओके चलो आमे जीवा टाइमर इज ऑन. समस्त रेडी पिला माने रेडी एवरीवन रेडी रेडी तो दुकानदार भाई रेडी सेशन गोटे भयंकर भाव लाइक एंड शेयर गोटे कर दिंतु कार्यक्रम आगे नवा. टाइमर चलती क्वेश्चन नंबर 1 अपन स्क्रीन रे नंबर 1 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1 देछि all of the following promotes assessment as learning except testing students as frequently as possible, telling students to take internal feedback, generating a safe environment for students to take chances, tell students to reflect on the topic they taught. Sir, you telling the student to take internal feedback. प्रथम लिखाई असेसमेंट आज लर्निंग. असेसमेंट आज लर्निंग माने आम आपको कहीपर सेल्फ असेसमेंट. वी कैन टेल इट दैट सेल्फ असेसमेंट रे पिला माने असेसमेंट आज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट भी पारे प्योर असेसमेंट भी पारे. पिला माने इंटरनल फीडबैक कलेक्शन करछन परस्पर ठू इंटरनल फीडबैक कलेक्शन करछन असेसमेंट आज लर्निंग पार्ट हबो. एक्सेप्ट पचार
वी आर जनरेटिंग ए सेफ एनवायरनमेंट आम एभली गोटे एनवायरनमेंट तैयारी करुचे जो पे चांस नौ असेसमेंट आज लर्निंग रे पिला गोटे फ्री एनवायरनमेंट तैयारी करा जाए जो पिला भितर सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करा जाए दे टेक चांसेस ऑफ देयर ओन लर्निंग भल कथा टेल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक दे टॉट जो टॉपिक पढ़ाई बाबद पिला निजे चिंता करंतु निजे भावंतु कोटी कौन प्रोब्लेम रहा तो असेसमेंट आज लर्निंग पार्ट हम तीनटा जाक हम एक्सेप्ट पचार एक्सेप्ट ए हम सी नुह टेस्टिंग द स्टूडेंट्स आज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल ये पिला को टेस्ट जो आप कर मोस्टली असेसमेंट ऑफ लर्निंग पार्ट पिला आप जो टेस्ट कर आज लर्निंग नुहे मु टेस्ट कर पिला इनवॉल्वमेंट मोर टीचर स्टूडेंट नुहे यस आंसर ये हम क्वेश्चन नंबर 2 टाइमर इज ऑन टाइमर अनुसार पढ़ु पढ़ के आंसर देवाई चेष्टा करूँ असेसमेंट डैश लर्निंग assessment dash learning influences learning by reinforcing the dash between assessment and instruction ये फॉर भर्ती करछि कनेक्शन भर्ती करछि हो देखिया असेसमेंट फॉर लर्निंग बा फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग बा फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग को इन्फ्लुएंस करे by reinforcing the connection between assessment and instruction पाठ पढ़ा और assessment भितर इधर को कनेक्शन को reinforce करे हाँ assessment फॉर लर्निंग बा फॉर्मेटिव जोटा आमे कहूचे एटा आमे कहूचे इट इज एटा कहूचे assessment and learning both are interconnected to each other माने assessment and learning are going together परस्पर सहित चलुछंती assessment and learning they are not separate, they are connected to each other. That is answer one ए हबो ओके जो ने ए देशन समस्त पिला माने बहुत बहुत धन्यवाद ढेर सारा धन्यवाद चला क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दापेन चेष्टा करंतु टाइमर इज ऑन क्वेश्चन नंबर 3 the weightage given in CC to summative and formative evaluation respectively are the weightage given in CC to summative and formative evaluation respectively are summative और formative evaluation रे CC रे जो weightage थाए summative केते formative केते ने आपण मानकर वर्तमान जो सेमिस्टर चलछि अपन देखिए सेमिस्टर 80 मार्क इंटरनल 20 मार्क नहीं सेमिस्टर 80 मार्क इंटरनल 20 मार्क तो समेटिव को आपन 80% दिया होची इंटरनल 20% इंटरनल जो 20 मार्क सेटा होची आपनकर फॉर्मेटिव रा पार्ट तो 80% मार्क एंड 20% फॉर्मेटिव एटा समेटिव एटा फॉर्मेटिव 80% इज समेटिव 20% इज फॉर्मेटिव कमेंट द क्वेश्चन नंबर 3 टाइम चलछि क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दा पे चेष्टा करंतु व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो पिला मानकर पोर्टफोलियो बनेला बेले कोडा गोटे भलो प्रैक्टिस कोडा गोटे भलो उपाय सिलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन कौन सी स्पेसिफिक रीजन अनुसार आम ये वर्क गुड़ा सिलेक्ट करवा जोटा को आम पोर्टफोलियो इनक्लूड करिया माने मु देखुची ये पिलाटा केबे प्रोजेक्ट आनी आज प्रथम थर पे बढ़िया प्रोजेक्ट आनी देन आई कैन इंक्लूड दैट प्रोजेक्ट केबे आनी आज करछि आई कैन इंक्लूड दैट प्रोजेक्ट इन द पोर्टफोलियो भलो कथा चलो सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स ऑफ वर्क टू बी पुट इन द पोर्टफोलियो पिलर सबु जक आइटम ऑफ वर्क को पोर्टफोलियो इनक्लूड करा जाय कि ना बेस्ट पड़ा इनको सब करा जाए नहीं
Making the child select his or work to be portfolio in portfolio. Making the child आम पिला मानक द्वारा पोर्टफोलियो रखा जाउथो आइटम को सिलेक्ट करा जाय परिबा कि हां भल कथा पोर्टफोलियो कैन बी सिलेक्टेड बाय द टीचर बाय द स्टूडेंट दिटा जाको हला मेक कलेक्टिंग द रेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत समय धरी भल भल काम गुडा को पिलार कलेक्शन करबा हां ए सी डी हो सब जगह नुहे बी सी बी टा नुहे हां बी नुहे माने एटा कटला एटा कटि गेला ए सी डी हो आंसर डी ओके ठीक अछि अब बुझि परछ पिला माने बुझि परछ जे जण भी अच्छा सेशन रे तुम तो सेशन गोटे लाइक कर दे पिला माने लाइक गोटे कर दियो यस क्वेश्चन नंबर 5 को चला तो कह दो तुम मत क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी आउट को हमें यूजेबिलिटी आउटर कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट रो अलग रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी तो कैरेक्टरिस्टिक्स जीव आउट आम नौ यूजेबिलिटी aptitude is not a part of characteristic of good test. The answer is D. Yes. Aptitude is a type of test. It's not a characteristic of a good test. Okay. Coming to the question number 6 for you. Question number 6 is on your screen. 6 नंबर देछि टाइमर चलछि पिला माने आंसर दबेन चेष्टा करंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल पर्सनल क्वालिटी असेस्ड अंडर कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन आ भितर कोटा गोटे सोशल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे सोशल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे जोटा आपन सीसी रे असेस करा जाय क्लीननेस सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स cooperation social characteristics discipline social characteristics painting is a creative characteristic painting दा आपन कर गोटे creative characteristics social characteristics हमें कहि परिबा नाही which one of the following is not a social personal quality that is assessed under CC तर आंसर आपन दबे बी नेबे अनबे बी is the right answer अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 टाइमर चलছে आपण माने रो टाइमर अनुसार आंसर दबेन चेष्टा करियो क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दियंतु 7 देजी असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 7 पढियो सब जक ऑप्शन पढियो गोटे ऑप्शन को एलिमिनेट करियो सिखंतु ऑप्शन एलिमिनेट करियो पेडागोजी रो सबटर मुख्य ट्रिक्स यस मेन ट्रिक So assessment for learning includes assessment before, during, after the teaching learning, self-assessment, formal as well as informal, feedback for student, and the process of teaching learning process. Assessment for learning formative before, during, after ही पारे चलियो सर formative रे self assessment जाउची हमें assessment आज learning रे self assessment को नो प्राय तो हाँ ना असेसमेंट आज लर्निंग द सेल्फ असेसमेंट को नो असेसमेंट फॉर्मेटिव टा फॉर्मल ही पारे इनफॉर्मल भी ही पारे स्थान काल पात्र ठीक नहीं जोठ पाइलो सिटी पिला को असेस कर दी पारो क्लासरूम में बसे की पिला मानक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे रे असेस करि पारो स्ट्रक्चर्ड वे रे हमें जो असेस करू ताको फॉर्मल कहा जाए अनस्ट्रक्चर्ड वे जो असेस करू ताको इनफॉर्मल कहा जाए फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पिला मानक पाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पाई फीडबैक कलेक्शन करा जाए हां पाठपढ़ा केम थिला एते भलो थिला आउ कोन भलो ही परिबो आई डब रिप्लाई आई भी हां सी इज ए पार्ट ऑफ यस कमेंट असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेशन सेल्फ असेसमेंट इज पार्ट ऑफ असेसमेंट आज लर्निंग क्वेश्चन नंबर 8
ये पढ़ो आंसर दियो टाइम आंसर दियो भी दउछि नंबर 8 for you. Which of the following is not the limitation of achievement test? एटा बहुत क्वेश्चन टा काली भी कहते नॉट द लिमिटेशन माने एडवांटेज कोटा गोटे अचीवमेंट टेस्ट रो लिमिटेशन नुहे एडवांटेज नुहे माने जदि काली करतो एटा कहि दे परियो रिपीट हे क्वेश्चन टा इट इज गुड फॉर क्रिटिकल एटा होची अचीवमेंट टेस्ट रो एडवांटेज खाली स्कोर को जाने परियोनी पिलार अचीवमेंट केते ए तीनटा तार लिमिटेशन हबो दुटे क्वेश्चन काली कहते रिपीट हो जाए चलो देख सी हम आंसर रिपीट मैंने प्राक्ट कौन अच्छे लॉ प्राक्ट आप्लाय हो थंडाई हाँ थंडाई लॉ प्राक्ट आम कहीपर ये देख भल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ पढ़ी टाइम नहीं पढ़ पढ़ी आंसर दियो किसी नहीं आराम से पढ़ पढ़ी आंसर दियो भलसे पूरा प्रथम क्वेश्चन गुड़ा भलसे पढ़ा दरकार ऑप्शन गुड़ा भलसे पढ़ा दरकार ऑप्शन में किसी किसी छोट छोट वर्ड थी जो तुमको लगे ऑप्शन टा ए सकाशे एलिमिनेट हम यहीटा हूँ पढ़ा टेक्निक तरतर हो क्वेश्चन आंसर देकी तुम ये मत इम्प्रेस करा किसी दरकार ना तुम निज पढ़ डोंट इम्प्रेस अदर ऑलवेज इम्प्रूव योरसेल्फ डोंट इम्प्रेस अदर ऑलवेज इम्प्रूव योरसेल्फ दरकार यस क्वेश्चन नंबर 9 देज तुम मान which of the following should be the reason for assessment of children पिला मानन को assess करिवार कोडा reason to separate and label the children पिला मानन को separate करिवा labeling करिवा एटा assessment रो negative word हमें labeling करनु जे high achiever low achiever we do not label the learner पिला मानन को labeling करू नाहु आ द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दीटा जाकर इम्प्रूवमेंट करा जाई पारे कि असेसमेंट गिव्स यू स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दीटा को हेल्प करे यस टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिला भीतर कौन चेंजेस आसुची लर्निंग प्रोसेस रे कौन चेंजेस आसुची आमे पर्टिकुलर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज करू ट्राई करू कि यस ट्रिपल आई इज आल्सो द आंसर टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस एरियाज ऑफ द चाइल्ड विथ पेरेंट्स आमे पिलार कैपेबिलिटीज पोटेंशियल स्ट्रेंथ पिला सहित डिस्कशन करू बापा मां सहित डिस्कशन हाँ सर इट कैन आल्सो बी ए कॉज ऑफ इट बुझ पाइल ना पिला माने यस सर नो और डबल आई ट्रिपल आई आई भी कैन बी द आंसर यस दरकार सर डबल आई ट्रिपल आई भी तीन जाक दरकार एटा नुहे हलदी मारी हलदी सब मार दियोनी हाँ ए नुहे क्वेश्चन नंबर 10 एंड पढ़ु पढ़ी के आंसर देवा चेष्टा करूँ क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू
which of the following देखिए which of the following is not a characteristics of an examination कोटा गोटे examination नो गोटे characteristics नुहे not a characteristics a formal test of a person knowledge or proficiency in a subject or skill an assessment to see how much one remembers or understand more formal longer and more general test just to ensure that nothing is wrong कौन अब आंसर examination characteristics नुहे कही आंसर इज ऑप्शन बी an assessment to see how much one remembers or understand एटा कते गोटे characteristics नुहे देख पिला माने तुम डिफरेंस अच्छे छोट अच्छी देखा जाती बोधे लगुच लेकिन टेस्ट आउ एग्जामिनेशन भितर डिफरेंस लिखा है प्रोसीजर इंटेंडेड टू एस्टाब्लिश द क्वालिटी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग स्पेशली बिफोर इट इज टेकन इनटू वाइडस्प्रेड यूज ये गोटे पिलार परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को आम चेक करूँ यहाँ हूँ डिटेल इंस्पेक्शन और स्टडी पूरा डिटेल देखो ये इज ए फॉर्मल टेस्ट with personal knowledge, proficiency in a particular subject or skill. An assessment to see how much one remember and understand. जने केते मन रखिछि केते बुझिछि एटा हला टेस्ट क्वालिटी. An inspection to see how well one is doing. जने केते भलो करूछि. एटा अधिक इनफॉर्मल, अधिक फॉर्मल. To check shorter period some lesson को हम यूज करू. Longer duration of study, end of the year or examination, OSSC को पूरा करा जाए. Short assessment to test for something specific, it a longer or more general test. Ensure that nothing is wrong. हेले इथे जो पॉइंट लिखा था, इटा फॉर्मल जाउचे पॉइंट टा, मोर फॉर्मल जाउची, longer और more general test सब जो पॉइंट अच्छी इथरे देखिए, तीन जो पॉइंट अच्छी इथरे, ये जो पॉइंट अच्छी इटा होची टेस्ट क्वालिटी. टेस्ट क्वालिटी एग्जामिनेशन क्वालिटी नुहे यस हाँ क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आंसर देखी दिल ना which of the following is not a characteristics of achievement test कोटा भितर गोटे achievement test रो characteristics नुहे it is a test designed to measure a person's knowledge skill understanding in a given field. The tests which are constructed to measure cognitive, cognitive and affective strategy change, that is potential and intrinsic property in an individual helps undertake particular type of task. That is a test that measures the attainment and accomplishment of an individual after a period of learning or training. Like it is a test designed to measure a person knowledge or understanding. देखो आंसर आ सी कही दो चार आंसर सी कहीं मैं गोटे पेज देखो 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 अचीवमेंट टेस्ट पॉइंट लिखा है देखो एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अटेनमेंट और अकम्प्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आफ्टर ए फिक्स्ड लर्निंग और टाइम पीरियड आम कहूँ अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट इज ए टेस्ट डिजाइन टू मेजर पर्सनल नॉलेज स्किल अंडरस्टैंडिंग जेकोसी गोटे पर्टिकुलर फील्ड रे. ए टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट is one designed to measure knowledge understanding in a specified subject what a particular subject. The test which are constructed to measure पिलारा cognitive cognitive बा psychomotor जोटा affective सब को जो मेजर करा जाए ये जो तीनटा पॉइंट लिखा हला पॉइंट अच्छी एटा अच्छी it is the potential and intrinsic property एटा intrinsic property कदा भी नहीं हाँ हाँ और नहीं मैथ एग्जाम चैप्टर कवर वाला परे ए टेस्ट इन सोशल साइकोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल एग्जाम यस दैट को जाए मैं तको सॉरी तको अचीवमेंट टेस्ट मैं जो कहूँ एप्टीट्यूड टेस्ट सब इनहेरिट द कॉम्पिटेंसी टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक टास्क द पोटेंशियल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी in an individuals help to undertake particular type of task. It is a pillar of internal ability. More ନିଜସ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଯାହାର ଭଲ aptitude ଅଛି mathematics ରେ
सी कंप्यूटर साइंस रे भलो करि परिबो नेचुरली ग्रो करि परिबो एटी जो ताले जो पॉइंट लिखा हैतला सी पॉइंट एटा होजी एप्टीट्यूड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स अचीवमेंट रो नुहे ओके हला क्वेश्चन नंबर 12 कैमरे जॉन आंसर दियो फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू Which of the following is true about peer assessment? Which of the following is true about peer assessment? कोड़ा peer assessment regarding true अटे ठीक अटे yes देखो is used to determine current level of student achievement. It helps students to develop lifelong skills in assessing and providing feedback to other. भलो कथा feedback to other. It provides a structured learning process for students to critique and provide feedback. Criticize करंदी feedback दियंदी. It helps to determine appropriate teaching strategy. Teaching strategy remedial class. करेंट लेवल ए आउ डी तो नुहे बी आउ सी तो हम बी सी हम टीचिंग स्ट्रेटजी सहित पीयर असेसमेंट के संपर्क ना पिलार स्टूडेंट लेवल ऑफ करेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट को अचीवमेंट टेस्ट रे जज करू एटा नुहे कदा हां क्वेश्चन नंबर 13 देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ascertains that डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कहूँ स्टूडेंट परफॉर्मेंस at the beginning of instructions, learning progress and failures during instructions, degree of achievement of instruction at the end, causes and remedies, and persistent learning problem during instructions. कौन कहबा हम तो डायग्नोस्टिक ऑप्शन डी हम एटा तो समेटिव हला समेटिव हेबो लिखा है फॉर्मेटिव हेबार पार्ट एटा आपनकर बिगिनिंग माने एटा प्लेसमेंट हे पारे कॉजेस एंड रिमेडी कोटी पे पिलार असुविधा होची कोन कोन ताको रिमेडी दिया पारे परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग पाठपढ़ा चलथिला बेले पिलार प्रॉब्लम कोन आ ताको समाधान कोन दिया जे पारे सेटा को ही हमें बेसिकली ताको ही हमें डायग्नोस्टिक बोली कंसीडर करू आंसर ऑप्शन डी हो नमस्ते जो माने अच्छो सेशन जदी पिला माने भलो लागुची भी इनफॉरमेशन बढ़ुची किछि भल लागुची जदी गोटे गोटे लाइक तो कर दे पिला माने एवरीबॉडी हां यस क्वेश्चन नंबर 14 को चलंदु टाइमरी जॉन आंसर द पेन चेष्टा करंदु क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच टेक्निक इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट एटा ऑलरेडी कहितली काली भी क्वेश्चन दा कहितली अब टेकिंग अपन चेकलिस्ट ने सब कितने पिला कहते टेकलिस्ट टूल सही आंसर मु रेटिंग स्केल कहतली रेटिंग स्केल टूल ए रेटिंग स्केल टूल भी टेक्निक भी अप्लाई करा जाय परिबो यस आंसर सी ही हो हला ना देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहि दे परियो समस्त आई थिंक जा क्वेश्चन दा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस before the teaching learning process, during the teaching learning process, all of the above. सर all of the above देखिए कि मन में लड्डू फूटा है हम सब all of the above अभी जल्द ही बोल देंगे यस इस all of the above देखकर मन में लड्डू फूटा तो आंसर इज ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहबन स्पेसिफिक डिफरेंस देखले बिफोर द प्लेसमेंट नौचे आफ्टर समेटिव नौचे ड्यूरिंग भी कह जाए स्पेसिफिक आंसर ड्यूरिंग ही तो प्रोसेस हम ओके हाँ चलो एटा क्वेश्चन नंबर 16
16 repetition of oral patterns is dash playing, drilling, understanding, summarizing. Repetition of oral patterns is dash. oral pattern को हमें oral pattern माने कौन से कथा को बारंबार बारंबार कहवा हाथ गोटे चलुनी हाथ गोटे चलते खेल कही था अंडरस्टैंडिंग समराइजिंग कथा किसी ना ओरल पैटर्न को हमें रिपीट करने को हमें ताको ड्रिलिंग बोली कहू ड्रिलिंग और प्रैक्टिस बोली कह जाए प्राइस लिखा है भलसे अक्षर लिखा सत्य ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस रिपीटेशन ऑफ ओरल पैटर्न इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग और प्रैक्टिस यस चलो क्वेश्चन नंबर 17 फॉर यू क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई रा मेन ऑब्जेक्टिव कौन टू हेल्प द टीचर कंप्लीट द कोर्स टू ले एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस and de-emphasize memorization, to satisfy parents with children process, to help authorities monitor school functioning. CCE रा मुख्य ऑब्जेक्टिव कौन टू ले एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड de-emphasize memorization हाँ सर ये भल ऑप्शन हमें थॉट प्रोसेस पर गुरुत्व दबा मेमोराइजेशन को de-emphasize करवा हाँ CCE रे तो से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पचरा होउची जो पिलार इन्वॉल्वमेंट बेसी रहिबो यस क्वेश्चन नंबर 18 टाइमर इज ऑन आंसर द चेष्टा करिया व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस मेकिंग स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनला बेले को प्रैक्टिस को हमें गुरुत्व देवा उचित सिलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो on the basis of specific reason वाला कथा selecting all items of work of a student to put in the portfolio all item तो नुहे कदा भी नुहे making the child to select his work to be put in the portfolio खराब ऑप्शन नुहे ऑप्शन डी रा भला ऑप्शन माने एरा खराब ऑप्शन नुहे यदि मल्टीपल म एक क्वेश्चन आउथर देथिले तीन टा ऑप्शन हे परथला इट इज चेंज करा खाली एबीसीडी ए बी ए और बी एम देलिनी नदले से तो भला ऑप्शन होची ऑप्शन डी टा बेटर ऑप्शन यस डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशियो पर्सनल क्वालिटी असेस्ड अंडर सीसी अंडर गोटा गोटे सोशियो पर्सनल क्वालिटी जाऊ ना क्वेश्चन आई जाए एगुड़ा तो एगुड़ा जाऊँ पेंटिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट चला भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भीतर कोटा जाऊ ना रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी एम्बिग्यूटी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी तो जीव एम्बिग्यूटी माने होची कंफ्यूजन एम्बिग्यूटी माने कौन कन्फ्यूजन टा गोटे गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक कदापि नुहे तो आंसर होची डी क्वेश्चन नंबर 21 टाइमर चलची टिक टिक 26 25 24 23 22 चलो टाइमर इज ऑन आंसर दबा चेष्टा करिया क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच असेसमेंट टाइप इज नॉट related to teaching learning process वो असेसमेंट टाइप टा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सहित रिलेटेड नुहे अचीवमेंट प्रोसेस रिलेटेड कंटिन्यूअस यस रेमेडियल यस क्लिनिकल असेसमेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी और साइकोलॉजी टेस्ट रे अप्लाई करा जाए पर्सनालिटी साइकोलॉजी टेस्ट रे जो आपनकर काउंसलिंग करा जाए सेतरे अप्लाई करा जाए यस एटा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो क्लिनिकल असेसमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एटा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो पार्ट नुहे ओके क्वेश्चन नंबर 22 टाइमर इज गॉन
assessment done during or before instruction is called as dash. Assessment done during or before instruction ताको हमें कौन कहू समेटिव फॉर्मल डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन बेटर ऑप्शन आप कौन सर फॉर्मेटिव। चलो जो मैंने भी ठीक आंसर दोस्तों पे बहुत बहुत धन्यवाद और 2-4 ट्रक 5-7 ट्रक धन्यवाद है समस्ते टी सेसन को गोटे लाइक कर दियो 4 ट्रक धन्यवाद नेला पर। क्वेश्चन नंबर 23 देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी रिगार्डिंग वो स्टेटमेंट आ भीतर करेक्ट। द लोअर लिमिट ऑफ जेडपीडी इज द लेवल ऑफ स्किल reached by the child on his or own that is independently जेडपीडी जोटा लोअर लिमिट जेडपीडी जोटा लोअर लिमिट ताको हमें कहि परिबा जेडएडी एतिकी पिला निजे करि पारे एतिकी पिला निजे करि पारे सेटा जो लोअर लिमिट। द अपर लिमिट ऑफ दिस इन दिस लेवल additional responsibility that the child can accept with assistance of an instructor ताकू साहाଯ୍य पाइले पिला जोटा को जाय को अपर लिमिट। लोअर लिमिट माने जोटा पिला निजे करि पारे साहाଯ୍य पाइ कि जो लिमिट को जाय ताको अपर लिमिट एटा को करेक्ट अछि। तो दीटा रिगार्डिंग कोडा करेक्ट बोथ डबल हेड करेक्ट एटा करेक्ट बोथ हाई एंड डबल हेड्स करेक्ट। ने क्वेश्चन रिपीट हे गला पिला ए इज किंदी लिमिट सॉरी शक्तिमान। चला क्वेश्चन नंबर 24 है 24 आंसर देवा चेष्टा करिबा। व्हाट इज फोस्टर्ड इन द प्री प्राइमरी एजुकेशन टू क्रिएट व्हाट इज फोस्टर्ड इन प्री प्राइमरी एजुकेशन टू क्रिएट कोहेसिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द क्लासरूम। ओ भलिया सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट आमे प्री प्राइमरी एजुकेशन रे को जिनसटा प्री प्राइमरी एजुकेशन रे सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को पढ़ाए क्लासरूम बाहर को जाई पिला मानन को आमे पिला मानन को पढ़ाई परिबा। रिस्पांसिव टीचिंग सोशियो इमोशनल लर्निंग पार्टनरशिप विथ पेरेंट प्री प्राइमरी एजुकेशन रे पार्टनरशिप विथ पेरेंट बहुत मैटर करे। प्रिपरेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इट कोड आसी प्री प्राइमरी लर्नर रे पार्टनरशिप विथ पेरेंट्स बहुत मैटर करे। आंसर ऑप्शन सी जवान दौरान वेरी गुड करेक्ट यस। प्री प्राइमरी लर्नर कहले अपन जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी केजी माने किलोग्राम न केजी माने कौन किंडरगार्टन ओके। क्वेश्चन नंबर 25 for you timer is on। which of the following आंसर देवा चेष्टा करें which of the following is an example of a question that requires student to reflect on their own learning। which of the following is an example of a questions that requires students to reflect on their own learning। how has your thinking about the use of verbs changed since the beginning of the class? What is your relationship between nouns? What is the relationship between noun and verb in a sentence? What is the definition of a verb? How do you change a verb to a present tense? आ भितर कोटा गोटे क्वेश्चन जोटा पिला मानकर निजस्व थिंकिंग को बढ़ाया पई साहाय्य करछि। वर्ब और नाउन और वर्ब भीतर रिलेशनशिप कोन इति किछि निजस्व थिंकिंग नाही। वर्ब डेफिनेशन कोन गोटे वर्ब तो प्रेजेंट टेंस केम चेंज करिवे एथरे किछि निजस्व थिंकिंग नाही। तमे कोन भाबुछ जदि मु वर्ब को क्लास what is your thinking about the use of verb changed since the beginning of the class? क्लास साइंस में वर्ब को केमिति चेंज करा जाय परिबो आ उधर तमन निजस्व चिंताधारा कोन यार एटा बेसी सेल्फ रिफ्लेक्शन को मन करछ। ऑप्शन एटा ओके यस
जे जने भी आंसर देछ क्वेश्चन रे एटा आपन मन पे होमवर्क टास्क हम रखी देता स्क्रीनशॉट नहीं जाइतु आंसर देवे कमेंट बॉक्स रे ला सेशन को समस्त गोटे लाइक कर दियो पिला माने जदि किसी भी बेनिफिट आपन को मिलू छी गोटे लाइक बाड़े देले बहुत बहुत धन्यवाद आपण मन पे ओ ट्रिपल एस रो आरआई अंगनवाड़ी सुपरवाइजर पे जे पढुछंती सब जगह टॉपिक रो थ्योरी अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि एम सॉल्यूशन बा 384 टका पड़े यदि Y594 एस कोड अप्लाई करछो एस फॉर मु सत्य एस बैच मध्ये जॉइन नहीं पारे बैच मध्ये 40 पिला नुवा बैच फिर स्टार्ट हेछि आपनकर काली आज 3 तारिख को स्टार्ट हेछि नुवा बैच जॉइन नहीं पारे कोड अप्लाई करिबे Y594 मैथ जो माने भरी पणित मैथ रे आपन माने भलो बैच दुर्बल पिला न पे नेतरे मानस संग बैच ऑफलाइन टेस्ट सीरीज घर जीवो दे पारिबे प्रोफेसर एसएसबी टीजीटी बैच 15 फेब्रुआरी स्टार्ट होछि जे कोनोसी बैच जहा नबो कोड अप्लाई जानछ ना मो कोड कोन व्हाट इज माय कोड क्या है मेरा कोड कोड कोन हां भाई 500 रे पड़ दबो तो अपन पे छोटिया लास्ट थर्ड ऑफ द डे the way to get started to quit talking and begin doing हमको स्टार्ट करिया गप बंद करंदु आगांतु तो गप बंद करी आगे ही काम आगे चलिबो हैला तो थैंक यू सो मच पिला माने जो ए जो होमवर्क दिली होमवर्क आंसर देबे क्लास भल लागला खराब लागला जहां कहिया कथा कमेंट तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देखा पिला माने संता काली विथ मॉक टेस्ट 9 टिल देन गुड बाय टेक केयर नमस्कार।